To tell you about the diversity. All the students know about the diversity, beta. It means differences. As you know that in our India, many types of people are living, है ना बेटा? Many castes are there in our India, है ना बेटा? Many religions are there in India. Okay, here it is the positive point of the democracy that in the democracy give permission to the diverse people stay in the democratic country या democratic form of the government. As I told you many times that two basic points of democracy. First one is equality and second one is freedom. First one is equality, means every person is equal if he or she belongs to general caste and the SCBC. Okay, it means both the person having the right to live in the democratic government. Okay बेटा, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, इट विल बी फेयर एक्सपेक्शन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस ए हारमोनियस सोशल लाइफ इन द सोसाइटी. एवरी पर्सन इज इक्वल. It will be fair expectation that democracy should produce a harmonious social life. ये क्या करती है बेटा, एक्सपेक्ट किया जाता है दैट इन द डेमोक्रेसी एवरी पर्सन विल लिव फ्रीली. ठीक है, एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज दस ए डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक डिजाइन. Second thing, it means in the complete this topic you will study about the equality, because in the equality every person can live easily with their dignity. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या करता है, कैसे हैंडल करता है, एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस. बिकॉज यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर इंडिया. इन द इंडिया मैनी टाइप्स ऑफ पीपल इज लिविंग हेयर, है ना बेटा. लेकिन क्या करता है, एवरी पर्सन हैविंग इक्वल राइट्स. नो वन कैन हार्म, नो वन कैन प्रेशराइज द अनदर ग्रुप वेलफेयर, है ना बेटा. अब जैसे क्या है, जनरल कास्ट है, वो SCBC के वेलफेयर को सप्रेस नहीं कर सकती ना. अब क्या है, इक्वालिटी है सबके पास, तो सबको इक्वल चांस है अपने आप को इम्प्रूव करने का. और जैसे कोई कन्फ्लिक्ट भी होता है, इफ़ एनी टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट arise then the judiciary and the legislature and executive can handle any type of the conflict, because in the legislature makes the rules and regulation for everyone, and these rules and regulation have to follow all the persons ना बेटा. हर एक पर्सन को क्या करना होता है, वही रूल रेगुलेशन बनाने होते हैं, मतलब फॉलो करने होते हैं. जो किसने बनाए हैं, लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, है ना. इफ़ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन आर सेम देन दीज रूल्स एंड रेगुलेशन हैव टू फॉलो ऑल द पीपल. ओके बेटा, अगर कोई किसी को क्या करता है, उसके साथ इनइक्वालिटी का बिहेव करता है, तो उसको क्या किया जाता है, आपको पनिशमेंट का प्रोविज़न है. ठीक है, टू कैंडिडेट इन ऑर्डर टू अचीव द आउटकम. फर्स्ट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन. इसके लिए इसके लिए बेटा टू कंडीशन है इस चीज़ को समझने के लिए आपको, कि ये सिर्फ मेजॉरिटी का रूल नहीं है. हम क्या कहते हैं, इन द डेमोक्रेसी इफ़ एनी पार्टी विल गेट द मेजॉरिटी देन दैट पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट, यही कहते हैं ना बेटा. लेकिन विद दिस वी कैन से माइनॉरिटी ऑल्सो रूल इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट. कैसे बेटा, कैसे वो करती है, देखो. अब क्या है, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, इफ़ द रिप्रेजेंटेटिव मेक्स द रूल्स एंड रेगुलेशन देन दैट रिप्रेजेंटेटिव हैव टू मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर एवरीवन वेलफेयर. इफ़ दैट
representative will make the rule for a particular section that in next election the another section will not give the vote to that candidate. है ना बेटा? अगर क्या है, आपका एक कैंडिडेट आपका कैंडिडेट किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए क्या करता है, वेलफेयर के लिए वर्क करता है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको क्या चाहिए, मेजोरिटी तो चाहिए जीतने के लिए, तो उसको क्या चाहिए, वोट्स चाहिए। और वो वोट बैंक बनेगा कैसे, इफ़ दैट कैंडिडेट विल मेक द लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कंप्लीट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। क्लियर? Next one is, it is also necessary that rule by the majority does not become rule by majority community in terms of religion or race or linguistic group. Now in the second point he is saying that majority means, here we will discuss about the majority. It means a candidate get the majority in the voting, not in the sense a particular group, a particular religion or a particular caste will the complete caste will give the vote to a particular candidate। अब बेटा इसका मतलब ये भी नहीं है, मतलब डेमोक्रेसी का अगर हमें डीपली मीनिंग समझना है तो इसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी, जिस पर्सन को मेजॉरिटी मिली है वही क्या करता है, रूल करता है, गवर्नमेंट फॉर्म करता है। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के पर्सन ही उसको चूज़ करेंगे। अब जैसे नरेंद्र मोदी का एग्जांपल ले लीजिए, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योर पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इज चूजन बाय ओनली द हिंदू, केवल हिंदुओं ने नरेंद्र मोदी को चूज़ किया है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेटा। जो आपकी माइनॉरिटीज़ है, कौन, मुस्लिम, उन्होंने भी तो नरेंद्र मोदी को चूज़ किया होगा। बहुत सारे मोमटम्स ने नरेंद्र मोदी को भी वोट दी होगी, है ना बेटा। तो ये क्या है कि आप क्लियर। तो इसका सेकंड क्या है कि सिर्फ मेजोरिटी को ही इसमें रूल करने की परमिशन नहीं होती। हियर इट इज़ द मीनिंग ऑफ द मेजोरिटी दैट a candidate will get the highest number of vote, not a highest या biggest society will provide the vote to a particular candidate। ओके तो क्लियर हो गया बेटा। सोसाइटी डाइवर्सिटी, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, दैट हाउ द डेमोक्रेसी इज कैपेबल टू अकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, बिकॉज इन द डेमोक्रेसी एवरी पर्सन हैविंग द इक्वल राइट, एवरी पर्सन हैविंग equal right or freedom also। okay, in democracy the majority can rule the government। okay beta, next one is dignity and freedom of the citizens। dignity means beta proud of freedom of the citizens in the democracy। it is the second basic point of the democracy, that dignity and freedom, that every person is freedom, every person can live with their dignity, with their proud। okay, democracy stand much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual। how can you say beta? Here read again this line, a democracy stand much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual। how beta? in the democratic form of the government every person is free to do the work according to their choice, according to their wish, but a condition is that the work should be positive। okay, and how you can say that the democracy promote the dignity? no one can, as we already discussed in our previous topic, that everyone have to do the work and everyone is equal in front of the law। no one is superior
and nowhere is lower. Everyone is equal. If everyone is equal, it means there is no chance of conflict, there is no chance of disrespect. If inequality is there in the society, it means one person is rich and one person is poor, then the rich person can insult the poor person. If both persons are equal, if the both persons are equal, equal treatment is there in the society, it means there is no disrespect in the society for anyone. Got it? Now you can take the example of in your India. Previous the 1947, discrimination was there in the Indian society. At that time, the India was not a democratic country. One person insult the another person. Why? Because at that time there was no system. है ना? Next one is the passion for respect and freedom are the basic of democracy. Here, as we already discussed, beta, all things are same, but points are different. You have to understand the concept only. The passion for respect and freedom are the basic of democracy. In the democracy, every person can have their respect. If that person will give the respect to another person, then automatically another person give the respect to that person. है ना बेटा? And when the respectful society will be there, when beta, when the equality should be present, when the equality is present in the society, then the every person will respect to another person. Third point is this has been achieved in various degrees in various democracies. In many type of country, it is present. Okay, but situation is different, method is different. But mostly in the democratic countries, the people respect to each other. Fourth one is most societies across the world were historically made dominated societies. As I told you about the India. In India, in our previous years, in our previous earlier time, the Indian society was the male dominated societies, because in the India, in earlier time, the male thinks that they are superior to the woman. It was the ideology of our India, but at present it is not done. In the form of the government of the democracy, every person is equal. No one is superior and no one is lower. Male or woman, both are the two wheel of a two-wheeler. Both are very important. Both are equal. Okay. Fifth one is long struggles by women have created some sensitivity today that respect to an equal treatment of women